हेलो बच्चों। तो हम लोगों ने जो है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था ना। तो पहले लेसन में हमने क्या देखा था कि लिविंग थिंग्स मूव, राइट, एंड अनदर थिंग दैट लिविंग थिंग्स नीड फूड। अब लिविंग थिंग्स का एक और कैरेक्टरिस्टिक है, लिविंग थिंग्स ग्रो। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सब ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं वो। A seed grows into a seedling and the seedling in turn becomes a plant. सीड जो है वो एक सीडलिंग में ग्रो करता है, राइट, और फिर वो सीडलिंग जो है वो प्रॉपर प्लांट में ग्रो कर जाता है, राइट। तो इस तरीके से जो है ग्रोथ जो है वो आपको सभी लिविंग थिंग्स में देखने को मिलेगा। सिमिलरली अ बेबी ग्रोज इनटू अ चाइल्ड, राइट, बेबी जो है वो चाइल्ड में ग्रो करता है। द चाइल्ड ग्रोज इनटू एन एडल्ट, और वो चाइल्ड जो है फिर बड़ा होके एडल्ट में बदल जाता है। अ चिक हैचेज आउट ऑफ एन एग, अंडे से जो है हैच करके क्या निकलता है, चिक, एंड देन ग्रोज इनटू अ hen और अ rooster, राइट। एग से हैच करके क्या निकला, चिक, और अब यही चिक जो है वो बड़ा होके जो है hen बन जाएगी या फिर रूस्टर यानी कि मेल जो है मुर्गा बन जाएगा। नाउ प्लांट्स ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम while animals grow only up to a certain age। तो देखिए जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सब ग्रो करते हैं, लेकिन प्लांट्स और एनिमल्स में एक डिफरेंस होता है। प्लांट्स ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम। प्लांट्स जो है वो अपने पूरे लाइफ टाइम तक ग्रो करते रहते हैं, यानी कि पेड़ लगातार देखते हैं ना बड़ा होता जाता है। while एनिमल्स ग्रो ओनली अप टू अ सर्टेन स्टेज, जबकि एनिमल्स जो हैं वो एक कुछ ही हद तक जो है वो ग्रो करते हैं, उसके बाद उनका ग्रोथ जो है वो बंद हो जाता है। लाइक आपके ही केस में मान लीजिए कि आप जो है 18, 19, 20 ईयर्स तक मान लीजिए आप लंबे होते जाएंगे, उसके बाद आपका ग्रोथ जो है वो रुक जाएगा। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो। नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रो नहीं करते हैं। अब चलिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं जिसके जरिए हम लोग ये जानेंगे कि लिविंग थिंग्स ग्रो। ओके, सो लेट्स वॉच दिस एक्सपेरिमेंट नाउ। An experiment to show that all living things grow. Welcome to the Science Lab, children. Today you will perform an experiment based on one of the most common and important characteristic of living things. All living things grow. A baby grows into an adult, and a seedling grows into a plant or a tree. Through this experiment, we will be able to see that a living thing grows. For the experiment, you need a potted plant, a measuring tape, water, calendar, paper and pen. Now let's start with the experiment. Take a healthy potted plant growing upright. Choose only a plant that has a single main stem. Now using the measuring tape, measure the length of the plant from the base of the stem to the tip and note down your observation on a paper. Now water the plant regularly for 2 weeks and note down its length on day 5, 10, and 14. What do you observe? You'll observe that the length of the plant has increased over a period of 2 weeks. Keep watering the plant for 2 more weeks and note down the length of the plant on the same paper. What do you observe? You'll observe that the length of the plant has further increased.
Now to see by how much did the length of the plant has increased over 2 weeks, subtract the length you observed on day 1 from the length observed on day 28. From these observations, we infer that all living things grow if provided with suitable conditions and proper nutrition. You have now finished the experiment successfully. Let's read. तो वेल स्टूडेंट्स, इस एक्सपेरिमेंट के जरिए आप लोग खुद भी देख सकते हैं कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सब ग्रो करते हैं। ऑलराइट, तो ये जो है लिविंग थिंग्स का एक और कैरेक्टरिस्टिक हुआ ना, दैट लिविंग थिंग्स ग्रो। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग्स का, दैट इज लिविंग थिंग्स ब्रीद। लिविंग थिंग्स जो है वो सांस लेते हैं। नाउ एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स ब्रीद थ्रू देयर नोज। जानवर और इंसान जो है वो अपने नाक के रास्ते से सांस लेते हैं। बर्ड्स ब्रीथ थ्रू टाइनी ओपनिंग्स ऑन देयर बीक्स। बर्ड्स जो है वो उनके चोंच पर जो है छोटा छोटा छेद होता है, उसके रास्ते से सांस लेते हैं वो। दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड नेयर्स। ये जो ओपनिंग होते हैं उनके बीक पर, चोंच पर, उन्हें नेयर्स कहते हैं। बर्ड्स ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर ओपन बीक्स। बर्ड्स जो है वो अपनी चोंच खोल के भी सांस लेते हैं। इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू एयर होल्स ऑन देयर बॉडीज। इंसेक्ट्स जो है वो उनके बॉडी पर जो एस्पायरिकल्स होते हैं ना, एयर होल्स, उनके रास्ते से सांस लेते हैं। प्लांट्स टेक इन एयर थ्रू टाइनी ओपनिंग्स ऑन देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमाटा। प्लांट्स जो हैं उनकी पत्तियों पर बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें कि स्टोमाटा कहते हैं, तो वो स्टोमाटा के रास्ते से जो है वो सांस लेते हैं या हवा लेते हैं अंदर। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं ये ब्रीथ नहीं करते, इन्हें ब्रीदिंग की जरूरत नहीं होती है। राइट, अब हम लोग इस एनिमेशन को देखेंगे और इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। Living things breathe. We all know that all living beings breathe in air to live and survive. But do all living beings breathe in air in the same way? Let's find out. Human beings breathe in air through the nose. The air we take in through the nose goes and collects in the lungs, in our chest. Just like us, many other living beings like cow, goat, lion, crow and rat also breathe through their nose and lungs. What about fish? Do fish have a nose to breathe in? No, fish have gills. Gills are special organs that help fish take in air from the water. When water passes through the gills, air present in water is absorbed by the gills. Now look at this bee. Does it have nose or gills to breathe? No. Insects like bees breathe in air through holes called spiracles present on their bodies. On the other hand, worms like the earthworm breathe through their skin. Even frogs breathe through their skin when they are in the water. When on land,
Frogs breathe in air through their lungs just like us. About plants. They don't have any breathing organ like gills, nose or spiracles. Then how do they breathe? Plants breathe in air through very tiny hole-like openings called stomata present on their leaves. As these openings are very small, we cannot see them with our plain eyes. So now you know how different kinds of living things breathe with the help of different organs. सो वेल बच्चों, हम लोगों ने जो है ब्रीदिंग के बारे में काफी कुछ और जाना आफ्टर वॉचिंग दिस एनिमेशन, राइट? नाउ लेट्स आंसर these questions and test our understanding. Birds breathe through tiny openings on their beaks called nares. Frogs breathe through both skin and lungs. Let's check our answer. Well, we got both the answers correct. So it means that we have understood breathing, right? और हमने क्या देखा कि नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो ब्रीथ नहीं करते हैं. अब अगले लेसन में हम लोग लिविंग थिंग्स के और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे. बाय बाय.